Now we want to see the difference between the improvement in technology and increase in saving rate in the context of growth. ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम इन दोनों को देखें तो what will happen? Improvements in technology are not bounded, and production function can shift over and over again because there are no limits on human knowledge and improvement in technology. But saving rate is physically bounded by one. टेक्नोलॉजी तरक्की करती रहे, जितनी भी ग्रोथ होती रहे टेक्नोलॉजी के अंदर, इट विल नॉट बेसिकली उसकी कोई नुकसानात नहीं होंगे. एवरी टाइम इट विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द इनपुट फैक्टर्स, और इनपुट फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन अपवर्ड शिफ्ट होती रहेगी जैसे जैसे कि इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहे, जैसे जैसे नया नॉलेज जनरेट होता रहे, जैसे कोई नई इनोवेशन आती रहे, जैसे कोई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहे. वही पीपल हमने शुरू के स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा था कि बेसिकली जो हमारे पास जितनी भी ग्रोथ हुई है पिछले को 50-60 साल में, वो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा जो है वो स्टीप ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, और that is only caused by the improvement in knowledge. You can say that that is only because of the new knowledge creation, नया knowledge जो create हुआ है, which further causes which further caused innovations that further caused research and development, जिसकी वजह से नई products आई हैं, नई technology आई, नया digitization हुई, computerization हुई, and there were different things जो कि आज से 50 साल या 70 साल या 100 साल पहले नहीं थी, लेकिन अब आके वो जो you can say that the first there was, आज से 150 साल पीछे की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज होता है, दैट इज फ्रॉम यूरोप से और यूके और इन ममालिक से जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज होता है, और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बिगनिंग जो सी है लेटर ऑन यू कैन से कि वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है पिछले 50 साल के अंदर. सो ये नया नॉलेज, नई टेक्नोलॉजी, नए R&D, नई इनोवेशंस, न्यू डेवलपमेंट्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, दे हैव इट्स बेसिकली you could say have a positive effect on growth every time whenever they are done. And you see now you could say that uh, technological growth, your technological revolution has converted into the telecommunication revolution in the past 20 years or past 10 years. पिछले 20 साल के अंदर अगर आप देखते हैं तो accessibility to the internet, then smartphones and laptops and all those things, they have just revolutionized the human life, although they have the different negative effects as well. लेकिन ये है कि इन्होंने although they have facilitated the human lives very easily. सो हम ये कह सकते हैं कि सोलो ग्रोथ मॉडल के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी है, although this model was presented and built in 1956, और 1956 में ये मॉडल बिल्ड किया गया, डेवलप किया गया या प्रेजेंट कर दिया गया. उस वक्त भी that was the impression of the economists that technological growth can increase, it can continuously increase the growth and productivity of the of different factors. If we want to generate growth in long run, per capita income and consumption within the new classical framework, growth must come from technological progress rather than from physical capital accumulation. ये उस वक्त का conclusion है. आज से you could say that 44 and 64 years back जब मॉडल प्रेजेंट किया गया तो उस वक्त का इम्प्रेशन है सोलो का कि जी if we want to have a long run growth चाहते हैं, so that is not possible just only because of physical capital, rather it is possible only because of the technological progress and technical growth. आप ये कह सकते हैं कि then that was आप ये कह सकते हैं कि later on जो है वो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के अलावा मॉडल्स के अंदर डिफरेंट अदर पॉसिबिलिटीज को भी इंक्लूड किया गया, लाइक डेवलपमेंट ऑफ new R&D, development of new knowledge, everything was included in the different growth models. तो solo growth model के अंदर technological progress ही is the only factor that can continuously enhance the growth. But in other models,
human capital also has a positive effect on the growth. Distorting government regulations, failure to protect property rights, and bad governance can be the shape of or equivalent to poorer level of technology. You can also think that there are different forms and different interpretations. आज के दौर के अंदर you could say that maybe 1,000 ways of interpreting the technological progress are there, but टेक्नोलॉजिकल जो devaluation है या poorer level of technology है, that can we think of different government regulations or different property laws or different property right laws, and bad governance is simply can be the form or equivalent to the poor level of technology. If it is through that there can be improvements in government policies and institutions, it is not so and seems to be infeasible. In the long run, the sustained growth would only depend on technological progress. Solow model shows how the long-run evolution of income and consumption per worker in a country are affected by structural parameters such as the country's rate of saving and investment and the growth of its population. So this is basically this line we could say as a little bit conclusion of the Solow growth model. A contribution to the theory of economic growth, definitely Robert Solow. Yes, this article presented a coherent dynamic model with an explicit process of capital accumulation by which saving and investment become new capital. Solar's model accounts for the fact that between any two successive periods, the stock of capital will increase by an amount equal to gross investment minus depreciation on the initial capital stock. So basically, these were the contributions that the Solow has made in the theory of economic growth models. This is all about the Solow growth model that I have selected out of the Solow growth model. अगर आप Solow growth model को वैसे देखें तो I believe that in many books, many chapters are based on Solow growth model. Solow growth model के बाद में मज़ीद रिसर्च की गई है. Solow growth model को फर्दर एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करके भी प्रेजेंट किया गया है. The same Solow growth model also were used for the sake of economic environment को भी शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया. There is a very famous ग्रीन सोलो मॉडल. अगर आप देखें तो गूगल करेंगे तो आपको सामने ग्रीन सोलो मॉडल नजर आएगा. तो ग्रीन सोलो मॉडल जो है that is also based on सोलो मॉडल, but that is basically to work out the environment in it. बाद में जाके environment को भी शामिल किया गया. Yes, yesterday मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन there are many economic growth models currently which also take care of the growth, which also take care of the environment. बहुत से इकोनॉमिस्ट्स का ये ख्याल है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको उस वक्त तक अचीव नहीं किया जा सकता जब तक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी. And what is meant by environmental sustainability or sustainable growth? Basically, sustainability का concept जो है वो यही है कि the resources of any form, the resources of any form like economic resources or environmental resources, natural resources, whatsoever we are enjoying, those resources must also be available for the coming generations. आने वाली जो generations हैं उनके लिए भी ये resources जो हैं वो मौजूद होने चाहिए. So this is basically the concept of sustainable growth. उस sustainable growth को फिर further आप देखें बहुत से economic growth models हैं. तो basically इन्हीं models को like जो Solow model है या जो Ramsey model है, इन different models को बुनियाद बना के इन्हीं के फ्रेमवर्क के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करने के बाद जो है वो further growth models built किए गए, and those growth models are definitely used to forecast the nature. Like very famous growth model for climate change and environment is DICE model, DICE, DICE model. So अगर आप उसको ऐसे ही गूगल करेंगे तो you will find that a huge model. I don't remember the exact pages of that article. उस research article के exact pages मेरे ज़हन में नहीं है, but they are around you could say 90, I guess.
सर ये सीरीज ऑफ रिसर्च वर्क है विलियम डी नॉर्डस का सर। राइस और डाइस दोनों मॉडल सर इनके हैं, उनको नोबेल प्राइज भी गया आई थिंक 2018 में मिला सर। डायनामिक इंटीग्रेटेड क्लाइमेटिक आई थिंक इफेक्ट्स। फैजान साहब, मैं गॉट अ कॉल सो कुडंट लिसन टू यू। दोबारा बताइएगा आपने क्या फरमाया। सर ये जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये सीरीज ऑफ रिसर्च मतलब उसकी है विलियम डी नॉर्डस की सर ना, जी जिसने जी डाइस और मॉडल सर, इसके साथ राइस मॉडल भी उन्होंने डेवलप किए थे। जी जी जी, राइस मॉडल है, डाइस मॉडल है। रीजनल इंटीग्रेटेड जी जी क्लाइमेटिक, जी और उन्होंने इसको असेस करने के लिए मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया था सर। इकोनॉमिक डैमेजेस जो होते हैं क्लाइमेटिक इफेक्ट्स के जो हैं सर, जी जी और जी। इसी पे प्राइज भी 2018 के ऊपर मिला सर। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है? नहीं सर, ये मेरी प्रेजेंटेशन थी हमारे कॉलेज लेवल पे, पंजाब लेवल पे हुई थी, तो वो बच्चों को सर तैयार करवाई थी नोबेल लॉरिएट्स पे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे वो जी सर, उसके जो रिसर्च वर्क था ना सर, हम्म। कमेटी ने जो पब्लिश किया था सर, वो सर जस्ट था। तो उसमें हमने अच्छा, देखा था राइस मॉडल जो इन्होंने सर दे दिए थे। हाँ राइस मॉडल है, फिर उसका लेटेस्ट वर्जन 2010-12 का या 10 का है शायद, या 9 का है, जो जी सर। कि डाइस मॉडल। जी सर। असल मुझे भी ये चीज़ें किए हुए 10 साल हो गया। मैंने व्हेन आई वाज इन एमफिल, तो मैंने ये सारी चीज़ें एमफिल में पढ़ी थी और की जी थी। जी। जी तो सर। उसमें मेरे जहन में जो थोड़ी बहुत शनासाई बाकी है, वही